Hello guys, once again welcome back to you all. Today we are going to start the contents for Bio Week and this is our part 4 of life process class 10th. So today we are going to see the transportation in plants as well as in animals. Before that, this is section 1 or section first of this video, section 2, section 3, section 4 and section 5. This video occupies 5 sections. In second section, we will discuss about the contents and the things which are transported in plants such as water and minerals. Then in section 3, we will discuss about food and hormones. Then in section 4, we will discuss about in animals, how the transportation system is occurring or is working in animals. And in section 5, we will discuss about the human transportation system or human circulatory system. So let's start the section 1. Here we are going to see the transportation in plants. Now let me tell you some basic things regarding to transportation. Actually, what the clue you get by the term transportation. And once again, I am telling you before that, if you had not watched the part 1, part 2 and part 3 of life process, go and watch those parts. And I am live today. Thanks for all those viewers because lots of comments are coming. Thank you. Thanks a lot. Once again, I am telling you, you all are looking and you all are commenting. Thanks from my heart. Very, very thankful. I am very, very thankful to you all. Now, let me tell you what is the concern which you get by the term transportation. Transportation का मतलब actually क्या होता है? देखो, transportation means movement of one place to another. In local term or in our general life. But what about transportation in our life process or in our biology? Actually, transportation means it's a system in which one part or one thing is made at one point or one thing which is occurring at one point need to be given to the all those points. That's why a system in which one thing or one concern which is made at one point is transported or is given or to all the points is known as transportation in biology. So first of all, we are going to see in section 1 transportation in plants. So let me tell you transportation in plants. So let's start. Actually, in case of plants, the transportation process is very, very slow as compared to the animals and steady. Why I am telling slow? Because they do not need the energy content as much as quick as the animals do. The reason is that they are always at one point, standing at one point. They don't move as usually as animals do. Because of that, they need lesser energy content, and even all those things they need is of in quick, not as quick time, but as somewhat in less time. So we are going to see first of all how the transportation system is occurred in animals. So in plants. So let me tell you another thing is that in case of plants, only two major things are transported. What are those major things which are transported at one point to another? Here we can see water and minerals, food and hormones. These two we will discuss. But before that, let me tell you some intro regarding to the transportation in plants. So let's begin here. Actually, look here, as we are going to see transportation in plants. Suppose that this is our plant. This is our plant. This is root, stem. Suppose this is the branch, and here we can see here the leaf. Suppose this is our plant. Simple figure I had just drawn here. Suppose this is our plant. Here it is the leaf. Here stem, branch, etc., etc. Root is also present over there. Now look here. As we already knew that food is prepared only in those areas, mesophyll parts where the stomata is present. Where the stomata is present, chlorophyll present, only in that area food is made. Chlorophyll can be at any point, means on branches, even on the leaves, all parts wherever the chlorophyll is present, food is made. Now look here. As we already knew, this made food need to be transported to the other parts in order for the development of those parts. That's why transportation is very, very essential.
Actually, this is section A. That's why we are going to see only the basic theories regarding to transportation. Now what about the concern of that minerals and water? As we already knew, water and minerals are observed from where? Observed from the soil. So for observing, there are certain things available in plants. As we already know, root is there, and root also contain root hair. We will discuss in detail in section 3. Now let me first introduce only. So the water content, mineral content which is observed from the soil need to be transported to those parts where chlorophyll present. Why? In order for the photosynthesis, because there we know water is essential, because water is only used with certain things, and that thing which we get as result is our food. So no need of any more discussion about this. Now let me tell you one more thing. Instead, not only the water but minerals content are also dissolved in that water solution, and because of that water solution, both water and minerals can be transported to the all parts of the plants. Now let's see the section 2, water and minerals. How water and minerals is transported. Yes guys, let's see the section 2 of this video. Water and minerals. How water and minerals is actually transported in plants. So let's start. Actually, water and minerals, or the transportation of water and minerals in plants, is done by two important elements. Which are those elements? So let's see. First one is xylem. Second one is tracheids. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी का कंफ्यूजन क्या होता है कि वे सभी जानते हैं कि ओनली जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट? वाटर एंड मिनरल्स. बट यू आर रॉन्ग. Even tracheids matters also in case of transportation. We will discuss what do you mean by tracheids, what is the use of tracheids later. So let's see here. Xylem and tracheids are both two elements which transport the water and minerals in plants. Now we are going to see about xylem vessels in detail. Before that, do you know xylem itself contains 4 items, 4 things which makes xylem. You had not studied in class 9, so go and visit that video of tissue of class 9 chapter, which is very important, because xylem and phloem both are known as vascular tissue, and even these vascular tissues made of certain elements by itself. यानी ये खुद 4 ऐसे एलिमेंट से बने होते हैं. ये दोनों 4 एलिमेंट से दोनों बने होते हैं. तो अभी तक अगर वो नहीं जानते हैं तो आपको ये वीडियो काफी कंसर्न नहीं होने वाला, बहुत डिफिकल्ट होने वाला. So go and visit for that only. So now we are going to see in detail regarding to xylem vessel. So let me tell you about the xylem vessel in detail, and even how the xylem vessel looks like. Here we are seeing an diagram, xylem vessel. So let's start. First of all, xylem cell is not what? Xylem cell is not living, non-living. Okay, it is non-living. And even xylem do not contain cytoplasm and even nucleus. Don't get confused, because xylem do not contain what? Xylem vessels do not contain what? Nucleus and cytoplasm. So ये मत कंफ्यूजन है कि बिना न्यूक्लियस का कोई वर्क नहीं कर सकता है, और कैसे कर सकता है मैं आपको क्लियर कर दूंगा. So this xylem vessel do not contain one cell or cytoplasm and nucleus, and even the boundary of these xylem vessels is lignified, means their lignin is present. And we already knew in class 9 lignin is a very strong material present over there, which can resist or which makes them powerful, which provide them a strength. And one thing more here pits are present. Do you know what do you mean by pits? पिट्स के बारे में आप जानते हैं? देखो, पिट्स एक्चुअली होता क्या? पिट इज द रीजन वेयर certain small holes are present. Actually, pits means holes, and these holes work a lot in xylem. Because do you know what is the use of pit? Let me tell you about the use of pit. Look here, pits are actually, as I told you, they are
thin holes where no lignin is present. Only pits are present in those areas. Look those figure. One diagram I had made here, lignin. Are you all getting that? Lignin. There is lignin. And in the downward area where pit is there, both are एक आउटवर्ड का एक डायरेक्शन मूव हुआ है, एक इनवर्ड का डायरेक्शन. और यहाँ पे देखो ये जो लिग्निन है इसके कारण ये क्या हो गया, थोड़ा फ्लैट हो गया. और लेकिन वहां पे वो फ्लैट नहीं है, यहाँ पे लिग्निन अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर पिट वहां पे अवेलेबल होता है. अब देखो इसके बाद हम लोग को जानना है अबाउट कि हाउ जाइलम वेसल वर्क. सो लेट्स पहले एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ कि जो जाइलम वेसल होता है वह नॉन लिविंग होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम इज नॉन लिविंग, देन नो साइटोप्लाज्म एंड नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन जाइलम वेसल, then they are lignified, means that lignin is present on the sidewise of the xylem vessel and pits are present over there where no lignin is present. What do you mean by pits? Pits means certain holes which contain no lignin. No, यहाँ पर से भाई क्लियर है कि xylem vessel एक्चुअली होता क्या है. अब देखो xylem के बारे में बेसिक जो हम लोग को जानना था जान गए. अब इसका यूज कहाँ है उससे जानने से पहले हम लोग ट्रैकिट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द ट्रैकिट्स. इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब ये जो डायग्राम आपको मैंने वहां पे शो किया है जालन का, उससे क्लियर हो गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी रिगार्डेड टू व्हाट ट्रैकिट्स. दिस मच क्लियर अबाउट जालम वेसल. नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेक्शन 2 ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स सी अबाउट ट्रैकिट्स. Now look here. Actually, tracheids are long spindles. No problem. We can write it as by its shape. We are saying that they are long and spindle, or they are of tubular shape. Means that they are tubular in nature. Now also look here. One thing which I had not told you about the xylem vessel is that here we can look that xylem का कोई end नहीं है. यहाँ पे आपको end दिख रहा नहीं. लेकिन here we can see that both the ends of the tracheids are what? Closed or packed. Hence we can say that the materials or the transportation system which is done by tracheids is actually not done by themselves, but the thing which transports or which helps in transportation in tracheids is that pits. ये pits क्या होता है? ये pits move करते हैं एक जगह से दूसरी जगह tracheids में, and then they help in transportation. Now let's start. How they are shaped? Tubular, same as that one, tubular nature. Now look here, closed ending, and now look here. As I told you, in case of xylem, what is present over there? Lignin is present on the boundary. But what about tracheids? देखो, अब tracheids में क्या होता है कि वहां पे lignin का अवेलेबिलिटी ना होके किसकी अवेलेबिलिटी होती है? वहां पे होता है अवेलेबिलिटी हमारा सेल्यूलोज की. So is it clear to you all कि सेलुलोज वहां पे अवेलेबल होता है. Now look here, as only something is need to be taught regarded to tracheids. बस इतना इंफॉर्मेशन क्लियर है. बस इसमें मेजर कंसर्न क्या है कि the ending of both the tracheids, both ends of the tracheids are blocked. Therefore the pits which are present in tracheids help in transportation. Now we are going to see about the 4 important terms which we will use later here in third diagram. So let me tell you all about that. Which are that? Let me start with the first thing. Now let me start. देखो भाई लोग एक चीज और कि जाइलम एंड जो हमारे ट्रैकिट्स होते हैं ये सभी प्लांट्स में अवेलेबल नहीं होते. अवेलेबल होते भी हैं तो जो हमारा ट्रैकिट्स होता है ये मोस्ट ऑफ द वर्क नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में दिखाता है, यानी दोज प्लांट्स विच डू नॉट फ्लावर और विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द 4 important terms which we need to study later. तो ट्रैकिट क्लियर है. ट्रैकिट बस कुछ नहीं था, बस इतना समझना है कि इट इज ऑल्सो a tubular element which helps in transportation in plants in water and minerals, and उसका कैसा both endings are blocked by what? Blocked by cellulose. बस क्लियर हो. अब इसके बाद देखिए 4th term, 4 important term. First one is root hair. Second one epidermis. Actually we all are clear from this क्योंकि क्लास 9 नहीं पढ़ा तो ये तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन क्लास 9 में ये सभी क्लियर हो गया. एंडोडर्मिस.
and the last one is root cortex. Let's start. First of all is, what do you mean by epidermis? Actually, suppose that this is our plant, this is our stem of plant. सब इतना समझो कि ये प्लांट का एक स्टेम है, ठीक है. Here is it clear? This is the stem of a plant. First layer is what? First layer is, वहां पे क्या होता है कि वहां पे लिग्निफाइड होता है मोस्ट ऑफ देम में, और वहां पे सेल कॉर्टेक्स या हार्ड लेयर अवेलेबल होता है. So look here. After the cell cortex, what is present over there? Epidermis. First layer क्या होता है, उसके बाद सेल कॉर्टेक्स के बाद epidermis होता है. Then epidermis के बाद क्या होता है कि वहां पे हमारा कुछ छोड़ के हमारा जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज अवेलेबल होते हैं. और ये जो बीच में छूटा हुआ भाग होता है, यहाँ पे हमारा तीन चीज अवेलेबल होता है. फर्स्ट क्या होता है एपिडर्मिस के बाद? एंडोडर्मिस. एंड एंडोडर्मिस के बाद क्या होता है? रूट कॉर्टेक्स. और एक्चुअली रूट कॉर्टेक्स क्या होता है कि ये एपिडर्मिस से पहले ही होता है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है एपिडर्मिस को भी. और ये जो हमारा रूट हेयर है इसे समझ लो. एक्चुअली देखो, अब जब हम लोग रूट हेयर को कंसर्न करेंगे तो देयर वी हैव टू स्टडी रिगार्डेड टू व्हाट? रिगार्डेड टू रूट. सो लेट मी इंट्रोड्यूस वंस मोर कि ये चारों है क्या. एक्चुअली यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये चारों टर्म्स हम लोग आगे जाके यूज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू यूज दीज फोर टर्म्स. सो लेट मी टेल यू वंस अगेन व्हाट डू मीन बाय दीज फोर टर्म्स. So let's start with the first term. First of all, we are going to see, as I told you, epidermis. What do you mean by epidermis? Let's see. It is the outer layer of the cell present in the root. ठीक है, ये कहाँ होता है अवेलेबल? epidermis. Most of the cases ये outer layer होता है. अब देखो रूट के हम लोग कंसर्न कर रहे हैं because we are going to deal through water and minerals, and water and minerals are always present in soil. Therefore, we are taking here root. तो यहां पर मैं क्या बोलना चाहूंगा कि एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ द रूट. ठीक है, यहां से क्लियर हो गया. अब देखो एपिडर्मिस क्या होता है कि एक ही सेल होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपिडर्मिस कितना सेल होता है, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, और एज एपिडर्मिस वन सेल होता है, वो भी काफी थिक होता है. एंड देन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द नेक्स्ट टर्म एंडोडर्मिस. देखो मैंने पहले बताया कि आफ्टर एपिडर्मिस some spaces are left, and उसके बाद क्या होता है कि vascular tissue, phloem and xylem are available there. And before xylem and phloem both are vascular tissues, वहां पे in between क्या होता है? present होता है endodermis is present over there. And now look here, जो हमारा सबसे inner most होता है उसको क्या बोलते हैं? root cortex. ठीक है, देखो द पार्ट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इज नोन एज रूट कॉर्टेक्स. मैंने पहले क्लियर किया कि एक डायग्राम के थ्रू मैंने वहां पे स्टेम का लिया था. यहाँ पे हियर वी आर सीइंग अबाउट द रूट. व्हाट डू मीन बाय एपिडर्मिस? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द रूट. देन एंडोडर्मिस, देन आफ्टर लिविंग सेवरल स्पेसेस देयर आर वास्कुलर टिश्यूज अवेलेबल ओवर देयर. और उसके बाद क्या होता है? देखो अब ये तीन तो हो गए. अब वहां पे क्या होता है कि जो हमारा ये जो रूट कॉर्टेक्स है ये एंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस के बीच में अवेलेबल आता है. ठीक है, and last one we are going to see about the root hair. अब देखो रूट हेयर क्या होता है कि wait for a moment. यस, ऑलराइट. नाउ लुक हियर, एक कंसर्न जो कि अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं. देखो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर पे कौन होता है कंपेयर? वी आर गोइंग टू सी हियर रूट. तो रूट में क्या होता है? रूट हेयर होता है. और उसके बाद क्या होता है? देखो एपिडर्मिस अवेलेबल होता है. अब एपिडर्मिस के बाद क्या होता है? अगला क्या आता है? हमारा रूट कॉर्टेक्स. एंड रूट कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है? एंडोडर्मिस. ठीक है, एंड इन ऑर्डर फॉर गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद जाइलम टिश्यू और जाइलम सेल, ये कोई भी वाटर कंटेंट को या मिनरल्स कंटेंट को पहले ये तीनों से पास आउट होना पड़ता है. then only they get here the xylem vessels. So we are going to see the mechanism or the process of the transportation of water and minerals. Here we are just familiar with what? The introduction of क्या हम लोग यहाँ पे क्या समझा कि कैसे
फ्लो करता है ये नहीं समझे, बल्कि किस किस कंटेंट्स के थ्रू प्रोसेस करता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ द movement of or the transportation of water and minerals takes place. Now we are going to see that contents which are essential. This diagram is very very essential, so let's see one by one. First of all, look here, in diagram only you will learn all those things. This is what soil, and we knew that ये जो हमारा soil होता है यहाँ पे water and minerals both are available over there, and the first thing by root here the water content or the minerals content is observed. ठीक है, यहां पर से क्या होता है कि रूट हेयर के थ्रू पहला प्रोसेस क्या है कि ऑब्जर्वेशन हुआ, एंड देन दैट ऑब्जर्व्ड थिंग मींस वाटर एंड मिनरल इज पास्ड थ्रू एपिडर्मिस. कहां से? एपिडर्मिस से पास हुआ, एंड नाउ आफ्टर एपिडर्मिस इट गोज टू द रूट कॉर्टेक्स. रूट कॉर्टेक्स से मिल गया, एंड देन इट गोज टू द व्हाट? इट गोज वेयर? It goes to the endodermis. And now look here, after passing the endodermis, here is the xylem vessel, and xylem vessel से मीट करने के बाद यहाँ पर से ये हर साइड मूव कर जाता है. But here we are just drawn stomata. The reason? Because a stomata plays a very very important role in transportation by the suction force which is acted through stomata by the process of transpiration. तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नया नया टर्म्स आ रहा है, सभी का डिफिनेशन मैं क्लियर करूंगा. नाउ लुक हियर, एज हियर एंडोडर्मिस से मीट होकर कहां गया? जाइलम वेसल से निकल के वह हमारा जाइलम में चला गया. एंड जाइलम मोस्टली यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ट्रांसपीरेशन, एंड आई टोल्ड यू ट्रांसपीरेशन इज ए प्रोसेस विच वेयर वाटर लॉस इज डन थ्रू स्टोमाटा. स्टोमाटा मीन्स टीनी पोर्स, एंड टीनी पोर्स ओनली प्रेजेंट ओवर वेयर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. ठीक है, तो बस इतना यहाँ पे क्लियर हो कि मैंने पहले ही बताया कि क्लोरोफिल कहां कहां होता है. पहला तो लीफ में होता है, स्टेम में भी होता है, एंड ब्रांचेस में भी होता है. सो यहां पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लीफ, एंड इन केस ऑफ लीफ जब यहां पे क्या होता है कि हमारा वाटर लॉस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. व्हेनेवर द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस अक्यूर्स, वहां पे क्या होता है कि 1 to 2% जो हमारा वाटर होता है, बस यही जो होता है वो हमारा फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है, जो कि ऑब्जर्व्ड होता है रूट हेयर से. लेफ्ट 98% ऑफ द वाटर इज ट्रांसपीरेटेड बाय स्टोमाटा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे ये इवापोरेट हुआ, इस साइड ट्रांसपीरेट हुआ, यहां से हमारा फिर से वाटर ऑब्जर्व किया गया रूट कॉर्टेक्स से. एंड दिस इज व्हाट द फाइनल मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल. तो आप लोग एक चीज कंसर्न कर रहे होंगे कि वेयर वी सी द यूज ऑफ ट्रैकेट्स. सो लेट मी टेल यू हाउ ट्रैकेट्स इज एसेंशियल इन द ट्रांसपीरेशन in the transportation of what? Transportation of water and minerals. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रैकेट्स कैसे यूजफुल है. यहां पर तो बस हम लोगों ने ये देखा कि जाइलम वेसल वहां पे अवेलेबल है, तो ट्रैकेट्स का यूज क्या हुआ अब देखो. देखो यहां पे मैंने स्टार्टअप में बताया था ट्रैकेट्स के इंट्रो में कि ट्रैकेट्स में क्या होता है, क्लोज होता है बोथ एंडिंग्स, एंड इवन पिट्स आर प्रेजेंट ओवर देयर. एंड ये पिट्स क्या करते हैं कि यही ट्रैकेट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. यानी ट्रैकेट्स में जो जो कंटेंट अवेलेबल होता है ये इन पिट्स के थ्रू मूव करता है. कैसे मूव करता है देखो, लेट मी टेल यू अबाउट द फुल मैकेनिज्म और द यूज ऑफ ट्रैकेट्स. अब देखो ये ट्रैकेट्स एंड जाइलम बोथ आर एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. नॉट ओनली जाइलम, बिकॉज जाइलम करता है लेकिन कहां नहीं करता, ये फ्लावरिंग में पूरी तरह से करता है, यानी दोस प्लांट्स विच फ्लावर. व्हाट अबाउट ट्रैकेट्स, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में वेरी वेरी एसेंशियल हो जाता है. नाउ लुक हियर, दिस इज आवर ट्रैकेट. यहां पे क्या होता है कि बीच वाला ये होता है थिक होता है, एंड एंडिंग हमारा थिन होता है. हियर पिट्स आर प्रेजेंट ओवर देयर. सपोज दिस इज देयर अनदर ट्रैकेट. यहां पर से क्या होता है कि ये पिट्स समटाइम्स यहां पर से निकल जाता है क्योंकि सेलुलोज प्रेजेंट है, और ये जो परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ वर्क करता है, एंड फाइनली ये कंफर्म होके इसमें आ जाता है, यानी यहां से ट्रांसपोर्ट होके सेकंड ट्रैकेट्स में चला गया. तो हियर वी सॉ द सेक्शन 2 ऑफ दिस वीडियो वाटर एंड मिनरल्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड हार्मोन्स. सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो.
Guys, we are going to see the section 3rd about the transportation of food and hormone. Be already familiar with the section 2, means that the transportation of xylem, transportation of water and minerals is done by xylem and tracheids. And even xylem means what? Xylem tissues contains 4 cells. We already knew it, no need of discussing it more. And one thing is that in case of transportation of water and minerals, it is always done in upward direction. The reason, because suction is always occurred in upward direction because of the transpiration, which is transpiration which is done in upward direction. Now, in case of transportation of food and hormone, it is done in all direction. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ upward होता है, बल्कि ये हर direction होता है, because the food content which is made by the leaf is distributed in all the parts of the plant in order to get the food content for their what so many purposes are there, no need of discussion anymore. Now let me say here, let me tell you about the cells or the components which are involved in the transportation of food and hormone. Phloem. Phloem. Actually, phloem tissues are only responsible for the transportation of food and hormone. So let's see how phloem is responsible. So let me tell you, even as in the intro only I told you, phloem itself is made of 4 cells. Which are these? Sieve tube, sieve plate, companion cells and phloem parenchyma. No need of discussing more, that we are going to see here. And look here, as I told you, we are familiar with that. Phloem cells contains 4 tissues. Phloem tissues contains 4 cells. Which are those? Sieve tube. Now let's see about the sieve tube. Here, in case of sieve tube, the wall of sieve tubes are cellulose, means that they are thicked, somewhat thicked, but cellulose are present. No lignin is present over there. And even sieve plates are those cells which work of क्या करता है, किस वर्क करता है? sieve plate वहां पे जैम करने का वर्क करता है. And even some certain small pores are present in sieve plate by which the content is transported. अब देखो इसके बाद ये जो हमारा sieve tube होता है, ये कैसा होता है? They are living in nature. ये जो हमारा phloem cells होते हैं, ये living होते हैं. Whereas we discussed about xylem, they are non-living tissues or non-living contents. और ये living तो होते हैं sieve tubes. They contain cytoplasm, but they don't contain what? वहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं होता है. और साथ ही साथ इसके बाद इसके साथ just after the sieve tube, the companion cells are available. Companion cells are the next content of the phloem tissues. और यहाँ पे क्या होता है कि there we can see the cytoplasm and even the nucleus. So these all are the components of phloem. And now let's see the mechanism of the transportation of food content. Look here, the transportation of the food made is known as translocation. Wait, translocation. Is it clear? The transportation of food made food is known as translocation, and this is done in all directions. Is it clear to you all? ये कहाँ पे होता है? हर डायरेक्शन में किया जाता है. And now look here, one another thing which we need to know about the translocation. What is that? देखो, एक चीज क्या होता है कि ये जो ट्रांसलोकेशन होता है, ये एक्चुअली ऑल रीजन में होता है, ऑल पार्ट में होता है. लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या मैटर करता है, यह जो फ्लोएम है हमारा, वह लिविंग होता है. इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारा ये जो स्टेम होता है, इस पार्ट में हमारा यहाँ पे एपिडर्मिस एंडोडर्मिस के बीच में समझो कि ये हमारा वस्कुलर टिश्यू एक फ्लोएम है, एक जाइलम है. तो जब जाइलम अपवर्ड की ओर सक्शन के थ्रू ले जाता है, तो यह जो फ्लोएम है वह हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है. और वहां पर प्रोसेस मैकेनिज्म क्या होता है, जो मैं आपको भी क्लियर करने वाला हूँ. व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कंटेंट. देखो, अब वी आर ऑलरेडी क्लियर दैट ट्रांसकोलेशन के थ्रू वहां पे क्या होता है कि मूवमेंट देखने को मिलता है. नाउ लुक हियर, सपोज दैट दिस इज आवर लीफ. यहां पे हमारा फूड रेडी हो गया, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड इज सिंथेसाइज्ड ओवर देयर. नाउ लुक हियर, एज this branch needs
energy. Not this is a branch not leaf. Suppose that this branch need energy content for the development of its body part. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही जहां पर भी एनर्जी का यूज होता है या एनर्जी की अवेलेबिलिटी होती है, तो यहाँ पर से जो मिड कंटेंटेड फूड होता है ये मूव कर जाता है फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू और यहाँ पे आसानी से आ जाता है. एंड इट डजेंट मैटर ये रूट तक भी जाता है. ऐसा नहीं होता है कि रूट को यहाँ पे फूड प्रोवाइड नहीं होता है, बल्कि ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर प्रोवाइडेड द फूड बाय द फ्लोएम टिश्यूज. This much clear? Now we are going to see the section 4, how the transportation process is done. Yes guys, let's see the section 4, transportation in animals. Now look here. Actually transportation in animals is done by one of the major content which is blood. What is actually blood? How we can define it blood? Let's see. Blood is a type of fluid connective tissue which we had studied in class 9. It is a type of fluid connective tissue. And blood contains 4 compartments. Blood itself contains what? 4 compartments. We are going to discuss one by one. First of all, what is the use of blood? Blood is essential in transporting the food content. Even they also help in what? They also help in protection, and even they also help in one another function. That we will see later. Now let me tell you the 4 compartments of the blood. First one, plasma. Second one, RBC. Third one, WBC. And last one, platelets. Let's start one by one about the different compartments of the blood. First of all, we will go through the plasma, and then at last we will go through the platelets. So let me tell you about the plasma. Let's look here. Actually plasma contains about 75 to 90% of the blood. Means as we already knew, blood is fluid connective tissue. So plasma is that part which is fluid in nature. ये कैसा नेचर का होता है? फ्लूइड होता है. And it contains about 75 to 90% of the total blood. अब देखो प्लाज्मा में क्या क्या होता है. एक्चुअली ऐसा होता है कि समझो दिस इज आवर वाटर मीन्स व्हाट हियर प्लाज्मा, एंड ऑल दीज 3 कंपार्टमेंट्स आर पुट हियर. ये ब्लड के अंदर ऐसे ऐसे हो जाते हैं, रखे हुए रहते हैं, और ये जो हमारा मेन कंटेंट होता है ये प्लाज्मा होता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल रिगार्डेड टू प्लाज्मा. बिफोर दैट गाइस, बहुत देर हो गया, आपको एक चीज नहीं बताया मैंने कि दिस इज द फर्स्ट कंटेंट ऑफ बायोविक. लेट्स लुक देयर. बायोविक कंटेंट, फर्स्ट कंटेंट ऑफ बायोविक, एंड आई हैड आल्सो प्रॉमिस्ड यू कि एट द लास्ट ऑफ दिस बायोविक विल कंप्लीट द सेकंड चैप्टर ऑफ योर क्लास 10 व्हिच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट somewhat more in detail regarding to plasma. Let's see. As I told you, plasma is fluid content, and it also contains the dissolved protein, digested food, common salt, waste products. Like waste product means what? Carbon dioxide and urea. Both are waste products. And now look here, we are going to see our first compartment is clear. Now we are going to see in detail regarding to RBC. ये बहुत ही बड़ा नाम है RBC. ये इसलिए बड़ा नाम क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है हमारे लिए. Now let's see about the RBC. Is it clear about plasma? Now we are going to see about RBC. Actually look here. RBC ऐसा होता है कि there are no nucleus. समझो ना, ये RBC बहुत खतरनाक है. क्यों खतरनाक है? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, सेंट्रोसोम नहीं है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, यहाँ पे बहुत कंटेंट्स नहीं होते हैं सेल का, जो कि एक सेल्स में होना चाहिए. सो आरबीसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. सो यहाँ पर भाई पहला क्या है कि देयर आर नो न्यूक्लियस. देन आरबीसी इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. व्हाई? बिकॉज दे कंटेन हीमोग्लोबिन. एंड वी ऑलरेडी न्यू बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन. यहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन क्या करते हैं कि अटैच हो जाते हैं. इसी कारण से ये आरबीसी जो है वह आरबीसी सेल्स आर हेल्पफुल इन द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ऑन देम.
एंड लुक हियर, ये चीज बहुत ही ध्यान से देखना कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर डाइंग दिस डेज बिकॉज ऑफ द suffrage of oxygen. But do you know why they are suffering from the lack of oxygen? The reason is that कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वहां पे मोस्टली जो ऑक्सीजन से ज्यादा हमारा स्टिकी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोर देन कार्बन मोनोऑक्साइड. Carbon monoxide easily they can attach with the hemoglobin, and whenever they get attached with hemoglobin they destroy the RBC cells, and finally most of the people die because of the suffrage of oxygen. Now let me tell you this more contents regarding to RBC. फर्स्ट क्या है कि भाई लोग यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस तो होता है नहीं है. अब देखो आरबीसी इसका नेम क्यों कि ये इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स. ये तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, नो नीड ऑफ डिस्कसिंग इट मोर अबाउट दैट. अब देखो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये बहुत ही मिस्टीरियस होता है. यानी आरबीसी भाई 2 से 3 दिन के अंदर ही मर जाते हैं. समझो कि ये अगर कुछ तो ऐसे होते हैं कि 2-3 महीने से लेकर हमारे मुश्किल से 4 महीने तक जाता है. यानी 100 से 120 डे का इनका जो लाइफ ड्यूरेशन होता है वो होता है. सोच लो एक ह्यूमन बीइंग का कितना साल का ड्यूरेशन होता है उनका एज लिमिट, और आरबीसी मात्र 100 से 120 दिनों के अंदर मर जाते हैं. तो ये सभी कंटेंट हम लोग आरबीसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अब देखो एक चीज और जो है कि हमारा बहुत ही एसेंशियल है आरबीसी के लिए, वह क्या जो समझो. देखो एक ऐसा साइंटिफिक रीजन है कि हमारा डेली पर डे देयर अबाउट 3 मिलियन टू 4 मिलियन रेड सेल्स डाई हो जाता है एवरी डे. मतलब सोच सकते हो कि कितना बड़ा मिस्ट्री है हमारे सेल के अंदर, हमारे ब्लड सेल्स के अंदर. नाउ वी आर गोइंग टू सी रिगार्डेड टू डब्ल्यूबीसी. देखो अब डब्ल्यूबीसी का जैसा ही नाम होता है आरबीसी क्लियर, बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमें आरबीसी के बारे में जानना. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट डब्ल्यूबीसी. अब डब्ल्यूबीसी का नाम सुनकर बहुत सारे बच्चे हंसने लगते हैं. द रीजन क्यों है कि डब्ल्यूबीसी बहुत ही कमाल की चीज है. जैसे आरबीसी कमाल है वैसे ही डब्ल्यूबी बहुत कमाल है. अब देखो डब्ल्यूबीसी का कमाल क्या. अब डब्ल्यूबीसी को हमारा फुल नेम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल. अब जैसे आरबीसी का कमाल का लाइफ ड्यूरेशन है, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी मैं कमाल का मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन दूंगा. फिर पहले स्टार्ट करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का कंटेंट क्या होता है. अब देखो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि दे हेल्प इन व्हाट, डिस्ट्रॉय. अब डिस्ट्रॉय किसको करता है, द फॉरेन पार्टिकल्स विच इंटर्स इन द सेल. और ये वर्क कैसे करता है, दे वर्क एज लाइक एंटीबॉडीज. तो इसलिए मैंने पहले बताया कि डब्ल्यूबीसी का नाम सुनकर बहुत बच्चे खुश हो जाते हैं और बहुत बच्चे हंसने भी लगते हैं. अब देखो अब जो सबसे पहला है कि ये एंटीबॉडी का वर्क करता है, यानी फाइट करता है इन्फेक्शन से या अदर डिजीज से जिनके कारण की डिजीज होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या माइक्रोब से. ठीक है. अब देखो कि हम आगे जाने वाला है कि अकेले डब्ल्यूबीसी नहीं करता बल्कि वहां पे ल्यूकोसाइट होता है. एंड ल्यूकोसाइट बिफोर गोइंग टू सी अबाउट ल्यूकोसाइट वी ऑलरेडी न्यू इन क्लास 9. तो हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि जो हमारा मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो डब्ल्यूबीसी का उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देखो एज आई टोल्ड यू डब्ल्यूबीसी हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन पार्टिकल्स और दे हेल्प इन इंप्रूविंग द इम्यूनिटी ऑफ द एनिमल्स. यानी ये ऑर्गेनिजम्स के इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करने का वर्क करते हैं. अब देखो यहां पे भी एक मिस्टीरियस क्या है कि देखो अब यहाँ पे मिस्ट्री क्या है जो मैंने पहले बताया कि डब्ल्यूबीसी जो होता है वहां पे न्यूक्लियस तो होता है भाई लोग. इतना समझो कि यहाँ पे न्यूक्लियस अवेलेबल रहता है, लेकिन न्यूक्लियस हर सेल में अलग अलग शेप का है. अगर मानो एक डब्ल्यूबीसी सेल में ऐसा है न्यूक्लियस तो अगले में ऐसा रहेगा. सब में डिफरेंट डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम. एंड इसका जो नंबर ऑफ डेज है ड्यूरेशन देख लो, खुद देख लो 2 से 3 डेज. मतलब तुम समझ सकते हो कि डब्ल्यूबीसी का मैंने पहले बताया कि बच्चों को सुनकर इसका नाम हंसी क्यों आती, क्योंकि ये 2 से 3 दिन में मरते रहता है और फिर अपने अपने वह बनते रहता है. तो यहाँ पर से क्लियर है भाई लोग कि व्हाट इज द थिंग विच वी नीड टू स्टडी रिगार्डेड टू डब्ल्यूबीसी. एंड नाउ द लास्ट थिंग इज प्लेटलेट. नाउ लेट मी टेल यू प्लेटलेट. प्लेटलेट द मेजर थिंग इज दैट प्लेटलेट इज हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सपोज दैट दिस इज आवर नर्व. हियर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दिस ओनली लेटर. नर्व्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि विच आर दी
content which takes the blood from one part to another. Now look here, suppose ये blood हमारा blood है, sorry ये vein है हमारा, और vein के through हमारा blood transport हो रहा. Now suppose that when at one point they get broken, what will happen? From here the bleeding will take place, and after some time you might observe that a red colored paste is present over there. What is that? Platelet. यानी मेजर आप लोग ये हमारा ये खुद का प्रैक्टिकल है कि whenever you get any wound, after some time you think you see that the blood stops. The reason because the platelet clots the blood over there, and after some times only the platelet do its work. तो यहाँ पर से ये चारों कंटेंट क्लियर है. Now we are going to see about the functions of blood. So let's start. देखो functions of blood के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, and the last content which we will discuss all regarding to transportation in of blood in human or human circulatory system. Now we are going to see the function of blood as a whole. Is it clear to you? Let's start the functions of blood. Already this video is very lengthy, so no, don't worry about that. Function of blood. One by one I will tell you first function. Do you know first function? First function, it helps in transportation of what? Water, minerals, waste, etc. First function. Second, it also helps in transportation of oxygen. Is it clear? Third, it protects the body because of the function of WBC. Fourth, it helps in connecting, because of that only it is known as fluid connective tissue. Now look here, after discussing the four functions, now we are going to see the fifth and the last function of blood, and after this we will go to the section 5 of this video because of human circulatory system. तो पहला फंक्शन मैंने क्या बताया कि ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स, तो सब क्लियर हो गया. सेकेंड, ये क्या करता है कि वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है. सेकेंड, देन वी टॉक्ड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, देन लेटर वी टॉक्ड अबाउट द प्रोटेक्शन, एंड द लास्ट थिंग we are going to see about how blood is important in the body temperature. देखो यही चलते मैंने लास्ट, that's why I told you the last function is very mysterious. You know why I told you? Let me tell you. It helps in temperature regulation. No way of writing more. Now look here. After this we will see the thing which take the blood from one region to another. Which is that thing which takes blood from one region to another? There we will see the vein, arteries and capillaries. And because of capillaries only, our constant body temperature is 37 degrees Celsius, about 98.6 degree Fahrenheit is remains constant. तो यहाँ पर से भाई लोग इतना क्लियर हो गया फंक्शन ऑफ ब्लड. द लास्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर विल सी दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इन सर्टेन organisms even as well. So let's see the section 5. Let's start the section 5 of this video. As we already know, this video is very lengthy, so we will try to resolve somewhat and then the left particle we'll see in next video. So let's start here. The transportation in animals. As we already told, as I already told you that in case of transportation, blood is very essential. Then heart works a lot, and the tubes which takes the blood from one part to another works a lot. And there are three tubes which help in the transportation of blood. First one is artery. Do you know about artery? Arteries are mostly thicker in nature. The reason because they take off the water which blood which is pumped out from the heart
to the other part of the body. And even there are two types of artery. First one is pulmonary artery and second one is main artery. That we will see later. Let's look here. Look here. Main artery and another is pulmonary artery. Main artery and pulmonary. The function of artery, they are mostly thicker in nature because of the function they do, as they take off the blood from heart to another part of the region. And we already knew that heart is pumping machine and it pumps always, it never stops even for a second because of the pumping system which need to be done by heart. तो भाई लोग बस इतना क्लियर हो कि आर्टरी दो प्रकार का होता है, मेन आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी. And what is the difference between main and pulmonary artery? We will see in the next video. And before that, let me tell you the second tube, which is vein. देखो, अब vein क्या करता है कि ये क्या करता है कि from all organs to heart. It brings the blood from all organs to the heart. ठीक है? And the last one is capillary. ये सबसे ज्यादा थिक, ये मीडियम एंड दिस वन इज थिनर. कैपिलरी ये सबसे ज्यादा थिन होता है और इसका फंक्शन क्या होता है कि दे जॉइंस द आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर. बिफोर दैट लेट मी टेल यू द रीजन ऑफ मेन एंड पल्मोनरी आर्टरी. देखो, अब ये मैंने पहले बताया कि ये क्या करता है कि हार्ट से ले जाता है दूसरे साइड में ब्लड. और यहाँ पे क्या होता है कि ये मोस्टली कैसे ले जाते हैं, ये दे टेक्स ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट here the pulmonary artery is exception because it takes of the deoxygenated blood or from the heart. अब ये deoxygenated blood कैसे जाता है ये हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड लेट मी टेल यू, vein is also of two types, main vein and pulmonary vein. And because of the exception, pulmonary is the name which is exception for in all cases. And this is the last part of this video, how this particular video of the BioWeek. Thanks for watching this video and please comment if you are getting any doubt, because this chapter is very useful for those students who are going to choose biology in their next class 11th and 12th. Thanks for watching. Have a nice day to you all.